So this is my helmet, and for motovlogging I have made a wide mic for video or posting some audio quality, and I purchased a wireless mic Granaro for the same. But if somehow it doesn't work or catches some noise from the background or the um, while riding, I'll be using the wide one, and I'll be fixing it permanently in the helmet. As of now, this is my um, intercom mic, which I pasted here. Same as it, I'll be um, pasting it right there. And this is the DIY one. And see the company वाला mic, which is किरनारो का. और ये इसमें भी मैंने पीछे वेलक्रो लगा दिया है. यहाँ पे डबल साइड टेप लगा के सेम एज दिस कि इधर भी डबल साइड टेप लगा दूंगा. एंड दिस is TRRS mic, which I've made just now using an old earphone mic and the cable and the jacket itself. The reason I made this one from the reason I made this TRRS mic because I'll be recording from the phone itself, and while I'll be recording from the camera, I'll be using this TRRS to TRS adapter, which also I made myself. This is also a DIY, as you can see. It's not pretty, but will work. So combining these two, I saved myself 1,200 rupees, I guess. और ग्रेडनारो के माइक के अंदर ऐसा कोई विंड मफ या विंड प्रोटेक्शन नहीं आती है, तो मैंने ये माइक ऐसा होता है कुछ, उसके लिए मैंने एक विंड मफ बनाया है. इसके अंदर मैंने फ़ोन यूज़ कर रखा है, जस्ट लाइक दिस वन. ऐसा पहले फ़ोन है जो मैंने माइक के ऊपर लगा रखा है ऐसा, एज यू कैन सी दैट. ये रहा. उसके ऊपर से मैंने एक विंड मफ बना रखा है जो हाथ से फोल्ड यूज़ करने में बहुत हेल्प कर देगा.